Hello, everyone. Welcome to the podcast. Today we have Mr. Balvinder Singh with us. He's principal of Guru Nanak Modern School and city coordinator of CBSE in Kanpur. He has over 23 years of expertise in education and has been brain behind setting up of many successful schools in India. He has been honored with several awards and recognitions for his outstanding contributions to education sector, such as Renowned Educationalist Award by Punjab University, the Best District Principal Award by Science Olympiad Foundation, the Shiksha Ratna Samman by International United Educationalist Fraternity, and many more. We got him today to share his valuable insights and knowledge on how to open up a school in India, the real challenges involved, and how big is really the opportunity. So, welcome to the podcast, sir. It is so nice to have you with us today. Yeah, good morning, Sushank ji. Nice to see you, and thank you for inviting me on your podcast. And definitely, we will discuss about various domains and areas which are important for starting up a new school. So I hope that it will be a very fruitful discussion today. Thank you. Yes. Okay, sir, so let's start with the basics. अगर आज किसी को स्कूल स्टार्ट करना हो तो क्या लीगल स्ट्रक्चर वन हैज टू फॉलो? मतलब इज इट जैसे बिजनेस स्टार्ट करना हो, सो वी हैव प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, वी हैव सोल प्रोप्राइटरशिप, वी हैव पार्टनरशिप, सो व्हाट इज दिस इन द केस ऑफ अ स्कूल? Yeah, really, it's a very important question. Very nice question. So, if anybody wants to start a school, in that case, first of all, he has to set up a society or a trust, because that is the first legal formality he has to complete. तो उनको एक सोसाइटी या ट्रस्ट फॉर्म करना पड़ेगा. या तो सोसाइटी बना सकते हैं या ट्रस्ट बना सकते हैं. तो उसके बाद वो अपने स्कूल के प्रोसेस को आगे लेके जा सकते हैं. कैन then go for other legal formalities. There are different, many other, formalities and documentations they have to complete to start a school. But first step is to form a society or trust. ओके, सो इट्स नॉट प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप ऐसे ही करके कोई स्ट्रक्चर नहीं होता? No, they can register them as under the Companies Act also. But generally people go for society or a trust. Okay, how many members are required to, generally in a society or a trust, how many members are there you see when So we talk they open about up a school? registration of a society. It's a very simple process. So minimum, I think 11 to 15 members are required in that. Okay. So they have to give their PAN card, Aadhaar card, and other documents, and it will be registered under the societies of registrar. So, like in Kanpur also, they have their proper office. So any advocate they can 10 to 15 consult people any are generally advocate. involved when it comes to opening up a school, not They less. can contact any advocate for that. It's a very simple process. It will be completed in 15 to 20 days. And now, like businesses have GST, so is there an implication of GST in schools? No, there is no GST. Okay. Now, sir, next question is that which is the best board to start a school with, and what are the categories of school? Because we see a lot of people opening up preschools now. So, would you please help us understand कि क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं? प्री स्कूल्स एक होता है, फिर 10 तक के होते हैं, उससे भी कम होते हैं, फिर 12 तक के होते हैं, बोर्डिंग होते हैं. सो व्हाट आर ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ स्कूल कैन वन कंसिडर व्हेन ही इज प्लानिंग to open up a school? Yeah. So first of all, we'll try to understand that there are different boards in India. Like CBSE is the biggest, largest board, and right now they have 35,000 schools in India, and few schools in abroad also, in Asia also. Apart from CBSE, the other boards which are available, that is ICSE, state boards also. Apart from that, there are some schools in India which are affiliated with the IB, that is International Baccalaureate, and there is another foreign board available, that is Cambridge. That so Cambridge. Okay. Yeah, Cambridge. So Cambridge and IB both are international boards. CBSE is the Central Board of Secondary Education. So it is the largest board in India in private schools. बात रही कि किस तरह के स्कूल और हो सकते हैं, like some organizations, they start school straightway up to class 10, and they go for straightway, they go for class 12th also.
तो इस तरह का सेटअप रहता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, दैट व्हाट टाइप ऑफ infrastructure you are going to offer. ओके Keeping in सर। mind the infrastructure and facilities and availability of funds, then you can decide एंड व्हाट that. अबाउट प्री स्कूल्स जो आजकल लोग छोटे छोटे खोल देते हैं, फ्रेंचाइजीज ले लेते हैं, व्हाट अबाउट प्री स्कूल्स? उसमें क्या, उसमें भी बोर्ड्स होते हैं क्या कोई, कि वो प्राइवेट Now स्ट्रक्चर होता है? this is first time in India that there is some policy for the preschools also. हम्म। In 2020, the government of India has introduced new education policy, हम्म। that is NEP 2020. So in हम्म। NEP 2020, this is first time that in any policy there is, there are references and there are, certain norms for the preschools also. So soon in the coming years, preschools are will also take some affiliation. But right now there is no board, there is no compliance, government compliance or any educational compliance on the preschools. That's why people they are starting in bungalows, in small houses, in small complex. They are starting. After the new regulations, there may be some infrastructure requirements as well, which Yes, they may yes, have to follow. definitely. Yes, yes, yeah. So there will be some compliance and norms for the preschools in the coming years. Okay. So, sir, out of the four major boards you have told us, CBSE, ICSE, IB, and Cambridge board, and their state boards also, which do you, what would you suggest anyone to go for? Which is the easiest one, and which has the most relevance in terms of curriculum and most acceptability? Yeah, if we And have which is the most difficult one, which is considered yeah, most premium one? Yes. So if yeah, one has to really think, if someone is starting a school, he will really have this first question in his head कि कौन सा yeah. बोर्ड लें हम लोग अपने स्कूल Yeah, में? as I told you that CBSE is the largest, biggest board in India. So हम्म। if we have sufficient funds and at least 4,000 square meter land, 4,000 square meter. yeah. So we should go for, in that case, one should go for the CBSE school only because CBSE is the growing and innovative board also. They हम्म। are, introducing many innovative practices in the teaching learning process and day to day. They are, it's a board which is updating on day to day basis. Okay. So they are following many new practices also. And if we talk about ICSE board is having very limited schools in India. I think they have 3,000 affiliated schools with that board. Okay. And in Difference the is too coming much. years, uh, and I think that in the coming years, it will be totally, this ICSE board will be obsolete Okay. because government is focusing on single board, single syllabus, single system of school administration and governance. So I And think sir, in the if coming years one doesn't only, has this much of land, 4,000 square meter, because land is one of the major, consideration when it comes to opening up a school, and not everyone has this kind of land. Then what the person can do if 4,000 square meters is not available to him? ICSE has some, lenient norms in case of land. So if you have less land, small piece of land, in that case, you can go for either ICSE board or you can opt any state board. Okay. And sir, what But about IB and if we talk about Cambridge? actually, Cambridge and IB, it's very, we can say, the fee structure is very high in IB and Cambridge. Okay. Only in metro cities or in big cities, parents, they can afford that fee structure. Do they have to give any affiliation fee to, their Yes, international? Cambridge is charging 3 lakh rupees per year for primary year program, Okay. PYP. Same Okay. is, I think, for the IB also. And they have very high infrastructure norms. Hmm. Like the teacher total ratio will be 1 is to 15 in IB and Cambridge. एक क्लास में 15 से ज्यादा 16 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते एंड यू Right. हैव टू प्रोवाइड एटलीस्ट टू फैसिलिटेटर्स. Hmm. Facilitator means they don't call teacher, they call facilitator. तो 15 Okay. बच्चे पे 2 टीचर देने पड़ेंगे आपको. Hmm. And the classroom will itself be, it will be not a classroom, it will be a laboratory. So there will be many equipments required in that. So that's why the fee structure will be very high. Like in India, the schools which are operating on IB and Cambridge, they are charging I think 20,000, 30,000 per month.
This type of fee structure is there. Hmm. Comparatively, if we talk about, moderate CBSE schools, they are charging 30,000, 35,000 per quarter. So Yes. that difference is there. Okay. Okay. Nice. Great. Okay. So after one has decided, and then comes the need of the staff. After one has decided which board to go and how to set up this whole thing. So are there any, apart from the land, are there any other infrastructural norms for CBSE, like sports infrastructure or music infrastructure, or size of classroom must be there? Because Yeah. I see a lot of See, CBSE boards out there, but everyone has different kind of a setup, and there are so much differences in one school to another. You go and difference is vast. Some have grounds, some have basketball court, some don't have. Yes. So as I what told you is. that if we talk about the cities with more than 15 lakhs of population, Mhm, the cities, those who are, in the cities in which there is population more than 15 lakhs, in mhm. that cities, the minimum land requirement is 4,000 square meter. Okay. Otherwise it is 8,000. Mhm, mhm, Minimum requirement as per CBSE norms is 8,000 mhm, square meters. But cities with 15 lakhs plus population, uh, mhm. in those cities, we can open a CBSE school with 4,000 Okay. square meters of land. And if Okay. you go to hilly areas, it reduces to 2,000 square meters. Okay. And if we talk about, NCR region and metro cities like Kolkata, Mumbai, Mhm. Hyderabad, Delhi. So the minimum requirement is 2,400 square meters of land. So Okay. that kind of difference is And, there. and school can start with classes up to 10th also and up to 12th also. It's not necessarily that they have to start with Uh, classes up till 12th. so But not generally, before. Can they also start from classes till class 5? see, once we have decided that now we have to open a school and we have to take affiliation from CBSE or any other board. Hmm. So if we talk about particularly, we talk about CBSE. Hmm. So at least that school should be running up to class 6. At Class that 6. stage, you can apply for the affiliation. Okay. So Nice. firstly, you have to develop the infrastructure. Hmm. You have to set up a society, and Hmm. you have to get it, affiliated with the state education department. Hmm. Like if we talk about उत्तर प्रदेश और कानपुर, तो कानपुर में अगर आपको सीबीएसई स्कूल खोलना है, तो सबसे पहले तो आपको बिल्डिंग बनानी चाहिए. बिल्डिंग बनाने के बाद आपको जो यहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी है, बीएसए, Hmm. you have to take a primary affiliation from the बेसिक शिक्षा अधिकारी, Hmm. 5वीं तक की और 8वीं तक की. And once your school will, cross class 6, your Hmm. students will be, promoted to class 6. That Hmm. year you can apply for the CBSE affiliation. Now, Okay. it can be directly for secondary level, class 10, or it Hmm. can be directly for the senior secondary level also. Okay. But generally, Secondary level is class 10, senior secondary is class 12th. but Okay. generally schools they go for class 10th affiliation first of all, and then Okay. they upgrade it to class 12. Okay. And if we talk about the infrastructural requirements, in CBSE, minimum classroom size should be 500 square feet. Okay. Yeah, minimum size of the classroom will be 500 And square any feet. number of classes for a section, for example, class first, any number of sections are also mandatory, that 2 or 3 sections should be there for every class. Like, see, if you have 4,000 of square meter land, 4,000 square meter land is there. In that case, you can operate 28 sections in total. 28 So, sections. Okay. uh, so sections are allotted according to the size of the land. If you have 6,000 square meter land, you can operate 36 sections. If you have more than 6,000 square meter land, you can operate 48 sections. Okay. Yeah. In So now, total, from class 1 to class 12th, there could be 48 sections. So 4 sections in per case of class. 8,000, if you have 8,000 square meter land, 8,000 square meter. if Yes. 4,000 square meter land is there, you can operate 28 sections from 1 to class 12th. 12th. Total of 28 sections. Yeah. Else you will have to increase your land to increase your strength. Okay. Yes, yes. And so what about the sports infrastructure? What would you suggest generally?
what do you look after in schools to have minimum sports infrastructure? Minimum, if we talk about minimum sports infrastructure, you should have a ground. Mhm. The ground, it can be, the size of that ground should be at least 200 meters track. So Mhm. if you have a 200 meters track in that, and then you can, accommodate football, hockey, cricket, kho, kabaddi, and you should have separate courts for volleyball, basketball, badminton, and a room for the indoor games. So if you have 4,000 square meter land in that area, it is very, easy to set up this type of sports, facilities. So you can have a good academic building, Mhm. academic block Mhm. of 30 rooms or more than 30 rooms, administrative block. Apart from that, you can develop 200 meters track and other facilities. Nice. Great knowledge for anyone who's planning to start a school. Yeah. आपने सब बता दिया कि कितना स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या होना चाहिए और कितना क्लासरूम होना चाहिए, लैंड एंड ऑल. And labs also, minimum size should be 600 square feet. Okay, and sir, what all labs are necessary? Yes, all labs are up to class 10. There is a composite lab Mhm. till class 10. And Mhm. when the school will be upgraded to class 12, they will Mhm. have separate labs for chemistry, bio, physics, Mhm. and also it is compulsory to have a maths lab. Okay. Then library, music room, computer labs. So Hmm. this is the minimum required. Okay, nice. Okay. So now once one has come up with the infrastructure, the second biggest task is to have the right people to manage the school. I think before, developing infrastructure, survey is very important. Before the infrastructure, survey of the place is important. Yes, because now there is very, high competition. If we talk Yes. about, it's generally it's not a business, but Mm-hmm. as very heavy funds are involved. Yes, absolutely. Start a, B grade school, Mm-hmm. B grade school. At least you need, see 4,000 square meter land itself needs a huge fund, and Hmm. to develop 4,000 square meter land, you need at least 7 to 8 TR fund for that. 7 से 8 करोड़ तक का फंड चाहिए होता है उसको डेवलप करने में Hmm. आज की Apart डेट from में. the land cost. हाँ, apart from the land cost. So it means if you add land cost and infrastructure cost, it will somewhere land land somewhere, between 10 to 15 CR. Even more depending upon the city and the land. Yeah. Land is the major factor. Uh, Yes. I'm telling if you are, opening a school in the outskirts of the city, then you need 10 to 15 CR. Hmm. If you are planning to start a school in the core of the city, then it Hmm. will be very high. The cost will be very high. So although it's a charity, education is a charity, it's not a business, but Hmm. any society or trust, uh, pumping this much of fund, for 15 CR or 20 CR. Hmm. So before starting a school, they should, go for a survey also that whether they will get the admissions or not. Hmm. Because in every city and in each city, in their nook and corner, you'll find a school. Yes. If we talk about Kanpur, in Kanpur, we have more than 200 big schools right now. If you Yes. go to Delhi, you will find more than 1,000 schools there. Go to Hmm. Mumbai, you will find 800 schools. Even in the small towns like Itawa, there are 60 schools, 60 to 70 schools. So that type of competition is So existing. what, how should, so can you also guide us that how exactly should one go for the survey? Should the person do the survey of the city or the neighboring area where the school is being opened? And Actually, location, location. any way you can suggest to conduct the survey? Survey means survey will be focused on the location, whether that location is a suitable location for starting a new school or not. Hmm. So that is the first survey. So Hmm. if that location, because sometimes uh, the societies or the business houses, they already own a piece of land. Hmm.
So if they have owned a piece of land, so the survey will be that whether that location is suitable to start a new school or not. And if they don't have land, piece of land, in that case, the survey will tell that in at what point or at what location they should, purchase a land. कि उनको Hmm. कौन सा सुटेबल लोकेशन रहेगा जगह खरीदने के लिए। तो अगर लैंड नहीं है तब भी सुटेबिलिटी पता लगेगी, अगर लैंड है तो ये पता लगेगा कि यहाँ शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ग्रेट, ग्रेट। चलिए, तो अब सर्वे हो गया, पता चल गया कि स्कूल खोल देना चाहिए। और अब हम हाँ, आते हैं कि कंस्ट्रक्शन चालू हो गया या और कंस्ट्रक्शन 80% कंप्लीट है। तो अब सबसे हु शुड बी द फर्स्ट हायर फॉर द स्कूल? और जैसे आइडली कंपनीज में इट इज सीईओ, इट इज एमडी, फिर सीईओ, जनरली फिर एचआर हेड्स, सीएक्सओज होते हैं, फिर वो स्टार्ट करते हैं अपना अपना काम, सीएक्सओज अपनी टीम बिल्डअप करते हैं। तो ये स्कूल में ये मैनेजमेंट कैसे स्टार्ट होती है बिल्डअप होना? actually from the very first day, the day when somebody have idea of starting a school, उनको एक educational consultant hire कर लेना चाहिए। हम्म। That educational consultant will tell and guide that whether the location is suitable or not. If the हम्म। location is suitable, then what type of compliances they have to face, and they have to what type of documents they need for that. And then design of the building is very important. हम्म। It should be very safe for the children, सेफ फॉर for the students. स्टूडेंट्स, ओके, यस। We have to keep in mind the safety norms, हम्म। and it should be very stimulating for the students for learning also. हम्म। A normal architect cannot guide for a educational building. So it is the job of the educational consultant कि building कैसी हो, classrooms कैसे हो, direction कैसी हो, कहाँ पर academic block हो, कहाँ पर sports facilities हो, हम्म। safety norms कैसे हो, security norms कैसे हो. So I think from the very first day, if somebody wants to start school, and that school should be effective for the society, useful for the society, they need a educational consultant. तो एजुकेशनल कंसल्टेंट उनको धीरे धीरे आगे बढ़ा के लेता जाएगा, एंड वंस द बिल्डिंग इज रेडी, हम्म। then they should go for appointment of a principal and administrative staff at least, ओके, ओके, and then they have to plan for the branding and marketing. That's ओके, ग्रेट, नाइस। मतलब विदाउट एजुकेशनल कंसल्टेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू फिगर इट आउट। ये तो एकदम अब सही देखिए ना, बात है, इट्स आप नॉट अ स्मॉल थिंग। if you look around, you will see many projects, many schools, इतने बड़े बड़े स्कूल बने, फेल बैठे। हाँ, बच्चे नहीं है। उन्होंने 50 करोड़ लगा दिया, 60 100 करोड़ वाले स्कूल बैठे हैं, बच्चे उनके पास 300 हैं। द रीजन इज लोकेशन। लोकेशन सही है तो बिल्डिंग, हम्म। उनका जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग प्रोसेस था वो सही नहीं था, कहीं ना कहीं फॉल्टी है। देयर आर सर्टेन फ्लॉज इन दैट। तो अगर उनके पास एक एक्सपीरियंस्ड एजुकेशनल कंसल्टेंट होता तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम ना आती। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। हमने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जिन्होंने बहुत पैसा लगा दिया है, और आज की डेट में दे आर लाइक टाइटैनिक, सिंकिंग, डूब रहे हैं वो। तो सर, नाउ लेट अस कम टू वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट कि स्कूल रेडी हो गया, हाउ टू रियली अट्रैक्ट। और उसके पहले आई हैव वन क्वेश्चन। ये ब्रांडेड चेन्स में कई लोग प्रेफर कर लेते हैं, एंड ब्रांड सर्टेनली हैज़ अ पुल रिगार्डिंग, बिकॉज दे आर एग्जिस्टिंग इन सो मेनी सिटीज़। तो क्या प्रेफरेंस होना चाहिए? क्योंकि जो 15-20 करोड़ लगा रहा है वो अपने आप को सेफ साइड करना चाहेगा, और ब्रांड इज क्लियरली सेफिंग देम इन अ वे कि वो कम से कम एक अश्योरेंस दे देगी कस्टमर्स को कि हाँ, अगर ये चेन है, हाँ इसका तो नाम सुना हुआ है, एटलीस्ट कुछ तो अच्छा होगा ही होगा। तो ब्रांडेड चेन बेटर होती हैं टू गो फॉर कि स्टैंड अलोन सिस्टम पूरा खड़ा करना चाहिए? और मार्केटिंग में इसका कितना योगदान है ब्रांडेड चेन होने का? एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। As per my perception and my point of view, one should own is, we should own our own baby, ओके।
go for the growth of the baby of others. हमें हम्म अपना ब्रांड बनाना चाहिए, नंबर वन. नंबर टू, इफ यू गो फॉर फ्रेंचाइजी मॉडल, आज की डेट में बहुत सारे सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं एजुकेशन में. हम्म इफ यू गो फॉर फ्रेंचाइजी मॉडल तो आपके जो रेवेन्यू का, इनकम का बहुत बड़ा चंक तो फ्रेंचाइजी मॉडल वाले ही ले जाते हैं एज ए रॉयल्टी, नंबर ओके वन. And in return, they are not giving that much of technology and support to the schools. Basically, they are giving a name. तो उस नाम के सहारे आप लोग आगे बढ़ते हो. और हमने 80% फ्रेंचाइजी मॉडल फेल होते हुए देखे हैं कि आफ्टर फ्यू इयर्स दे रोल बैक. तो उन्होंने इनिशियली तो किसी ब्रांड का नाम ले लिया और फ्रेंचाइजी मॉडल में चले गए. बट 4 साल चलाने के बाद उनको लगा कि हम बहुत बड़ा अमाउंट इनको देते जा रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, पैसा उनको दे रहे हैं. तो उन्होंने रोल बैक किया और उसके बाद फिर से स्क्रैच से स्टार्ट किया. ओके. उसके क्या होता है कि आपकी एक ड्यूअल कह लीजिए कि इमेज मार्केट में चले जाती है. तो वो फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है. नहीं, दिस तो इज अ वेरी नाइस इनपुट कि हायर, इट इज ऑलवेज गुड टू ओन योर ओन बेबी. हाँ, आप एक अच्छा एजुकेशनल कंसल्टेंट ले तो आप ब्रांड को खड़ा कर दें. तो आप अपने ब्रांड को मल्टीप्लाई कीजिए, अपना नाम बनाइए. और ऐसे बहुत सारे स्कूल्स आपने देखे होंगे, those who are now they are brand, they have created at their own. तो आज वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. One should नाइस. go for feeding his own baby. Don't go for the growth of the baby of लेकिन others. सर, जस्ट टू रियली गेट एन आंसर ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन विच रियली इवन आई कांट थिंक अंडरस्टैंड, कि स्कूल में अपने बच्चे को डालना एक पेरेंट के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि बच्चे की लाइफ डिपेंड करेगी. तो पेरेंट्स जनरली गो फॉर अ सेफ साइड, राइट? क्योंकि फीस भी कम्पिटिटिव ही सब लोग रखते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत कम रख देता है. और एक नए स्कूल के लिए जिसने इतना 20-25 करोड़ रुपए लगा के और इतना स्टाफ और इतना पर हेड एक्सपेंसेस रन करके खड़ा कराओ, इट मस्ट बी सो डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट इनिशियल 50 people. Just for 50 people their struggle is so much, I think so. So how does a school really, when in the beginning years, and not just the first batch, even the second batch, even the third batch, initial, I think कितने batches तक struggle रहता है, and what is generally a strategy or what could be a strategy of a school कि अपना ये tough time pass उसका हो जाए? एक्चुअली ये प्रॉब्लम वहीं आती है जहां पर वही कि लोकेशन का सर्वे नहीं किया गया होता, गलत लोकेशन पे स्कूल स्टार्ट कर दिया जाता है. मान लीजिए आज एक एरिया है जहां पर ऑलरेडी 20 स्कूल एग्जिस्ट कर रहे हैं. उसी हब ऑफ स्कूल्स में आप अपने आप को लेके आ रहे हो and you are introducing a new school. So it means already you have to compete with 20. So if you want to jump into a competition, high competition, then you should have, a muscle of, you need a different muscle for that. Yes. Different academic. मतलब अगर लोकेशन अच्छी हो तो इनिशियल बच्चे मिल ही जाते हैं, मतलब लोकेशन का बहुत बड़ा. हाँ, अगर आपकी लोकेशन, आपने ऐसी लोकेशन चूज की है जहां पर अभी ज्यादा कंपटीशन नहीं है, मार्केट खाली पड़ी है, स्पेसेस हैं वहां पे, तो वहाँ 300-400 बच्चा इनिशियली मिल जाता है. एंड दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट. पहले साल में ब्रेक इवन आ जाता है. बट अगर आप कंपटीशन में जंप कर रहे हो और आपके पास अच्छा मसल, स्ट्रॉन्ग मसल नहीं है, यू डोंट हैव दैट टाइप ऑफ ब्रेन विद यू, तो फिर तो बहुत स्ट्रगलिंग रहेगा, कई सालों तक स्ट्रगल रहता है. तो दैट इज व्हाई एजुकेशनल कंसल्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस 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 यस. सारथी आपको बढ़िया चाहिए. युद्ध लड़ने के लिए सारथी अगर सही नहीं होगा, हाँ, बहुत टेक्निकल काम है. स्कूल खोलना इज अ वेरी टेक्निकल जॉब एंड अ वेरी एग्जॉस्टिव, वेरी बिग जॉब. लोगों को लगता है, जिनके पास पैसा है उनको लगता है कि कहीं भी खोल दो, पैसा है, बिल्डिंग बड़ी बना देंगे, चल जाएगा. हमने ऐसे भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं जिन्होंने इतना बड़ा ओपन शो से स्टार्ट किया, करोड़ों रुपया लगाया, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने आके उसको इंट्रोड्यूस किया, आज की डेट में 300 बच्चा लेके बैठे. ऐसे भी है. और ऐसे स्कूल्स भी हैं जिनकी लोकेशन सही थी तो पहले साल में 700 बच्चा है उनके पास. और या फिर ऑलरेडी आपका एक नाम एग्जिस्ट कर रहा हो, वो अलग. तो इट डिपेंड्स. देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स फॉर दैट, डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर दैट.
चलिए, अब हम एक दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं नाउ, बिकॉज यू आर ऑलरेडी रनिंग अ स्कूल एंड यू कंसल्ट सो मेनी स्कूल्स। अभी आपने एक ओवर द टाइम एक स्पेक्ट्रम देखा है अपने टाइम का, बहुत पहले से आप देखते आ रहे हैं और आपने देखा है, और अभी बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन कल्चर आ गया है। मेरे टाइम पे तो देखिए इतना नहीं था जब मैं स्कूल में था, बट आई एम श्योर कि बच्चे स्कूल में, बच्चों के घरों में तो है ही है। और जब से कोविड हुआ है तो सबके पास अपने अपने फ़ोन्स आ गए हैं, मैक्सिमम बच्चों के पास आ गए हैं, कई पेरेंट्स ने वापस नहीं लिए हैं। What are the challenges you are seeing which have just recently come up among the students in recent years after COVID? Yeah, mobile phone was allowed during the COVID period only, but now mobile phone is not allowed in any school. Okay. रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने भी एक सर्कुलर निकाला है जिसमें ये क्लियरली बैन किया गया है कि चिल्ड्रन दे कैन नॉट कैरी मोबाइल फोन टू द स्कूल। हम्म। बट क्या तो चोरी छुपे मोबाइल लोग फोन लेके तो नहीं आ अलाउड जाते नहीं हैं? है, बट स्टूडेंट्स लेके आते हैं। एक्चुअली देखिए, चैलेंजेस ये हमेशा से रहे हैं, बिहेवियर रिलेटेड चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं, चाहे वो हम्म। आज से 100 साल पहले थे। ऐसा नहीं था कि बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स नहीं थी। तो उनको डील करना आना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म। ठीक है, पहले टेक्नोलॉजी कम थी तो पहले के स्टूडेंट्स कुछ और तरह की शरारत करते थे। हम्म। हो सकता है उस समय बाथरूम में जब वो, बम फोड़ देते थे। नहीं उससे भी पहले चले जाए, मैं तो आज से 80 साल पहले जाने की बात कर रहा हूँ, जब गुल्ली डंडा खेला जाता था, है ना। तो उस समय उस तरह की शरारत करते थे। वो हम्म। लकड़ी की जो गिल्ली होती थी उससे आंख फोड़ देते थे, तो उस समय की शरारत थी। आज की शरारत बदल गई है। तो चिल्ड्रन दे आर लाइक मंकीज, यू नो। और उनकी एज है, उनका शरारती होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका शरारती होना, उनका मिस्चीवियस होना, ये शो करता है कि दे आर हेल्दी। बट एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, एज ए मैनेजर ऑफ द स्कूल, you should know that how to deal with that behavior. That is important. तो ये चैलेंजेस तो बच्चों में, एडोलेसेंस एज है जो 12 से लेके 16 साल 18 साल की एज है, उसमें उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बच्चों में चेंजेस आते हैं। फोर्थ हम्म। फिफ्थ के बच्चे जो हैं, जो पहले 9 10 के बच्चे शरारत करते थे, अब वो हम्म। फोर्थ और फिफ्थ ग्रेड के बच्चे करते हैं, बिकॉज वो हम्म। मीडिया का एक्सपोजर ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो बच्चों से बात करना जरूरी है, बच्चों से ओपन टॉक करना जरूरी है, और उनको उनके साथ फ्रेंडली होके बात करना जरूरी है। हम्म। तो उससे बिहेवियर अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। जनरली हम लोग बॉडी को कंट्रोल करना चाहते हैं। ज्यादातर स्कूल्स क्या कर रहे हैं, टीचर्स क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि बच्चे को हम कंट्रोल करें और उसकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं कि यू विल नॉट मूव, यू विल नॉट लुक राइट, यू विल नॉट लुक लेफ्ट, यू विल सिट स्ट्रेट। पर वो हम्म। माइंड को तो कनेक्ट ही नहीं कर रहे। वेरी नाइस पॉइंट। तो तो काउंसलिंग की क्या अगर आप स्कोप उनके रहता साथ है कनेक्ट स्कूल में? वेल कर काउंसलर का मतलब एक पाए। बड़ा रोल होता है, या टीचर्स को ही नो, काउंसलिंग की एवरी ट्रेनिंग एक टीचर, देनी एवरी पड़ती है? टीचर, स्कूल के हर एम्प्लॉय का काम है कि बच्चे के साथ एक कनेक्ट बनाए। बच्चा जब स्कूल में आए तो उनको लगे कि मैं एक होमली एनवायरनमेंट में आया हूँ, ये मेरा ही घर है। और थोड़ी बहुत शरारत तो उन बच्चे करेंगे, उसको एंजॉय भी करना चाहिए। बाकी ऐसा सच ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। ये वही लोग कहते हैं जिनको बच्चों को डील नहीं करना आता है कि बच्चे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। यही बच्चे हैं जो बाद में जाके देखिए बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं, करके जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिजनेस चलाते हैं। कोई हम्म। कुछ बनता है, कोई दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। तो हम्म। एकदम से जो स्कूल में बिल्कुल बेकार था वो कैसे अच्छा हो जाता है बाद में। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा माइंड सेट है, उसको बदलना पड़ेगा। अच्छा, अब सर हम लोग अपने लास्ट राउंड की तरफ चलते हैं। जस्ट बिफोर दैट, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है और जो गवर्नमेंट का जो टेक है, इसमें आप कुछ बताना चाहेंगे? लास्ट राउंड हमारा रैपिड फायर राउंड है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो भी। बट रियली इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो न्यू यस एजुकेशन पॉलिसी दी है। यस यस यस। एंड इट्स अ वेरी, यू नो, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, वेरी वाइब्रेंट पॉलिसी। अगर इसको फॉलो किया गया और इसकी अवेयरनेस बढ़ती गई तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। और जो बड़े बदलाव की मैं बात कर रहा हूँ, द फर्स्ट मेजर, यू नो, ट्रांसफॉर्मेशन विल बी, metamorphosis will be from the rote learning to the, you know, understanding. ये जो मगिंग अप रटंत विद्या जो है, तो अगर ये एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई और हमने समझ लिया, तो रटंत विद्या से हम लोग एक्चुअल एजुकेशन में आ गए।
और वो क्या लग रहा है सर, ये कब तक इम्प्लीमेंट हो सकती है? काफी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, सीबीएसई भी बहुत इनिशिएटिव ले रहा है, केवीज में भी हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी लगी हुई हैं, बट इट विल टेक हम्म। अनदर 2-3 years टू ओके। गेट इट ग्राउंडेड फुली। 2-3 साल बाद मतलब जो बच्चे मतलब जनरली स्कूलिंग अपनी एजेस आने कंप्लीट शुरू हो गए करेंगे। हैं, जैसे अभी धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। मेन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को लॉन्च करना है, जिसके लिए पॉलिसी आ गई है, फ्रेमवर्क भी जल्दी आ जाएगा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो रटने से हटाएगी बच्चों को, हम्म। अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन की तरफ लेके जाएगी। नाइस। चलिए हम लोग वेट करते हैं जल्दी से कि चीज़ें अच्छी हों और हमारे भारत के बच्चे और अच्छे निकल के आए जस्ट आफ्टर द स्कूल, वो उतने लायक हों कि अपना खुद का स्टार्टअप कर लें या कुछ कर लें। जी नॉट दे हैव टू बिल्कुल। गो थ्रू अनदर 5 years of 3 years of education, हाँ, बिकॉज पीपल फिनेंशियल आर वेरी लिटरेसी पे भी स्मार्ट। बहुत काम चल रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी पे भी सीबीएसई बहुत काम कर रही है। उस पे भी काफी वर्कशॉप, सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स हो रही है बच्चों की। क्योंकि 18 साल का बच्चा देखा जाए तो एकदम रेडी होता है कुछ भी करने के लिए। अगर जी उसको सही बिल्कुल। एजुकेशन जो बीबीए वाला बीकॉम वाला पहले से ही थोड़ा सा दे दिया जाए तो आई थिंक, और अब तो मीडिया की वजह से पीपल आर वेरी अवेयर, स्टूडेंट्स आर वेरी अवेयर अभी। आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए जो स्टार्टअप्स चला रहे हैं और स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में देखिए गवर्नमेंट जॉब खत्म है। एब्सोल्युटली यस, इवन आई थिंक सो। और प्राइवेट सेक्टर भी जो है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी जो है, वहाँ पे बहुत स्किल्ड बंदे का काम रह गया है। अगर आप में कोई एफिशिएंसी है, स्किल है, पर्सनैलिटी है, तभी सर आप एग्जिस्ट। व्हाट आई फील इज कि जिस तरीके से एआई आ गया है और इतने बड़े सारे जॉब्स ले रहा है तो जॉब्स बहुत कम हो जाएंगे कॉर्पोरेट कम हो स्ट्रक्चर जाएंगे। में। यस। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में फिर स्टार्टअप्स आएंगे नए नए, तो पीपल हैव टू बी रियली स्किल्ड, सो ओनली स्किल्ड पर्सन विल मेक इट बिग। बट सिर्फ जो लोग चल जाते थे, थोड़ा सा एमबीए कर लिया, कम्युनिकेशन ठीक है, और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आप बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बना के दे रहे हो और ब्रांड चल रही है, तो क्या नई नई ब्रांड्स आ गई हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स को चैलेंज कर रही हैं, तो इतनी लग्जरी नहीं रह जाएगी कॉर्पोरेट जॉब्स में पहले जैसे रहती थी। सो skill is has become very important and this is what will take even our nation forward. This is what I think. तो हमें क्रिएशन की ओर तो बच्चों को लेके जाना पड़ेगा, इनोवेशन की ओर लेके जाना पड़ेगा, हम्म। कि उनको क्रिएट करना है। सही है। तो सर अब चलते हैं हम लोग अपने लास्ट राउंड में, ये रैपिड फायर राउंड है, आप बस एक वर्ड में आंसर करिएगा मेरे क्वेश्चंस का। जी जी जी। ठीक है सर। बोर्डिंग स्कूल वर्सेस डे स्कूल। डे स्कूल बिल्कुल अच्छा होता है। बोर्डिंग स्कूल वहाँ अच्छा होता है जहाँ पर बहुत लिमिटेड स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो दोनों की अपने अपने अलग रिक्वायरमेंट्स है, दोनों की अपने अपने अलग एरियाज है। दोनों ही डिपेंड करता है कैसी रिक्वायरमेंट है पेरेंट्स की, उसको फुलफिल करते हैं। ओके। यूपी वर्सेस पंजाब। सारे स्टेट्स अच्छे हैं, हमारा देश अच्छा है जी। तब भी बहुत सर प्यारा आपका देश है पंजाब सारे। में ज़्यादा आप रहे हैं, फिर आप यूपी आए नहीं, कानपुर में। पैदा तो मैं ईस्ट में हुआ हूँ सर, आइजल में पैदा हुआ हूँ, मिजोरम में। तो हमारा देश, मेरा देश महान है, ऐसा नहीं है बात। ओके ओके। सीबीएसई वर्सेस आईसीएसई बोर्ड, आई नो उसका आंसर क्या आप देंगे। सीबीएसई इज वंडरफुल। यू नो, बहुत इनोवेशन हो रही है सीबीएसई में। ओके आने वाले समय में सीबीएसई के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। ओके ये नाइस। आप नोट कर लीजिए चाहे मेरी बात। देयर विल बी ओनली वन बोर्ड, दैट विल बी सीबीएसई। स्कूल्स आई ऑफ कानपुर वर्सेस स्कूल्स ऑफ लखनऊ। देखिए, सिटी का कोई फर्क नहीं होता। स्कूल स्कूल का स्कूल के साथ अंतर हो सकता है, सिटीज का कोई अंतर नहीं है। ओके। कानपुर में भी बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, लखनऊ में भी बहुत अच्छे हैं, और किसी गांव में भी स्कूल अच्छा हो सकता है, ऐसा नहीं है। नाइस। इन पर्सन टीचिंग वर्सेस ऑनलाइन टीचिंग। Online teaching can be a substitute and, a remedy, time remedy, but it cannot replace blackboard teaching, classroom teaching. It will, it ओके can be a, facility to the teacher and the students, but not, it cannot be a core teaching. ओके नाइस। फीमेल टीचर्स वर्सेस मेल टीचर्स। फीमेल टीचर्स की परसेंटेज ज्यादा है और ज्यादा ही रहेगी, और उनमें एक कनेक्ट बनाने का जो क्षमता है ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू मेल टीचर्स। बट इन एडमिनिस्ट्रेशन यू विल फाइंड मेल मेल। तो टीचिंग में फीमेल्स आ गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में मेल्स आ गए ओके वाओ, दिस इज नाइस। हैं।
academics versus extra curriculum for students? Now, so it is holistic development, sir, 360-degree development. All are equally important. अब तो को-करिकुलर को को-करिकुलर कहा ही नहीं जाता, उसको भी करिकुलर कहा जाता Okay, nice. है। हाँ, Nice, nice. Okay. Um, okay. Apart from schooling, and one of my favorite question, Amazon versus Flipkart. मुझे लगता है Amazon इज बेटर देन फ्लिपकार्ट Nice, nice. Okay. क्योंकि मैंने Uh, ज्यादा शॉपिंग Amazon से ही किया है। nice, nice. अब ये मेरे मतलब का क्वेश्चन है. What is the last kitchenware product you bought online? किचन वेयर प्रोडक्ट अभी रिसेंटली मैंने वो किचन पेपर रोल्स परचेज किए हैं। Okay, okay, okay. हाँ Nice, nice. और सर कोई कुकवेयर, कोई स्टोरेज वेयर? हाँ, एक अभी बहुत अच्छा प्रोडक्ट मैंने एक बहुत ही रिसेंटली मैंने देखा है कि एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट फ्लैश हो रहा है ऑनलाइन शॉपिंग में, नायरा किचन वेयर के नाम से। ओह, तो थैंक यू. मैंने उसके कुछ प्रोडक्ट्स भी यूज किए हैं अपने घर पे भी। इट्स रियली एक्सलेंट प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच सर. ओके, ऑन दिस नोट हम लोग सर फिर से एक बार एक और इंटेंस डिस्कशन लेके आते हैं. बहुत अच्छा डिस्कशन रहा ये वाला तो. ये एंड बहुत अच्छा रहेगा अगर कोई ऐसे लोग हो जो स्कूल शुरू करना चाहते हो, तो एक यस, तरह का फेस टू फेस डिस्कशन या एक पैनल डिस्कशन हो सकता है उनके साथ। तो एब्सोल्युटली. anyone who is interested to start a school in India, abroad, Correct, so correct, correct. So I'll be also putting your phone number and email address. So if anybody is willing to contact you for any kind of yes, consultancy or yes. information, so they can reach you out. हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। yes। Okay. Anything else, sir, you want to suggest to existing school principals, school owners, or some anyone who's planning to start सब up? अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ स्पेस ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएशन। हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें Mm-hmm. कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दैट वी आर ऑन द टॉप एंड वी आर द बेस्ट। उससे स्टैग्नेशन आता है, तो स्टैग्नेशन इज नॉट गुड। तो हमें डेली कुछ ना कुछ लर्निंग रीडिंग करना चाहिए, प्रिंसिपल्स को, मैनेजर्स को, एंड वी शुड इन्वॉल्व विद द चिल्ड्रन बिकॉज चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम बच्चों के बीच में जाएंगे तो हमें रोज ही नई नई अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, जिसके सोल्यूशन को जब ढूंढेंगे तो अपने आप इनोवेशन हमारे में आएगा। उसी से हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, वो बिल्कुल बदलता जाएगा। Nice, Every nice. day is a new opportunity for us. Nice. Okay. On this note, thank you so much, sir, again for coming up for the podcast, and let's really meet up again very soon. यस सुशांक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस जो पुटअप किए और मुझे भी मौका मिला कि मैं उन क्वेश्चंस को जस्टिफाई कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। Okay, thanks.